Hello friends, if you're a YouTuber, you know the importance of writing a good title and having a great thumbnail for your videos. I've talked about how I create videos on my mobile phone and I've also told you how I use different apps to create my YouTube thumbnails. In this video today, I'm going to talk about the entire process that I follow to create these thumbnails. I'm going to show you the apps that I use and I'm also going to give you a full hands-on demonstration of creating a thumbnail for this particular video that I'm creating right now. You must have seen the thumbnail already on YouTube. So that thumbnail I'm going to create on my smartphone and I'm going to show you the entire process in this video. Hello, my name is Stan and you are watching the Indian Freelancer YouTube channel. If you're new here, please consider subscribing because I talk about different ways of earning money online and freelancing in general. If these are something that you like, please consider subscribing and stay connected. Before moving ahead, please give me a like so that this video can reach to different people who are looking for such kind of solutions and use their own smartphones to create such wonderful thumbnails for their YouTube videos. Thanks a lot for watching. Let's start the video. तो जो ऐप मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है PicMonkey और once you have downloaded it and installed it on your phone, it will look something like this. I'm using an Android phone here, so if you are using iPhone, you can download it from there as well. Alright, तो जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको ऐसे चार ऑप्शंस मिलेंगे. ऊपर में आपको कुछ ट्यूटोरियल्स मिलेंगे कैसे PicMonkey के ऑप्शंस यूज़ करते हैं. दूसरा ऑप्शन होगा जहाँ पे आप एक न्यू डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, वही हम यूज़ करने वाले हैं. तीसरा है एडिट ए फोटो. यू कैन सिलेक्ट एनी फोटो फ्रॉम हियर एंड यू कैन एडिट दैट. और चौथा है स्टार्ट विथ ए स्टॉक फोटो. तो यहाँ पे कुछ स्टॉक फोटोग्राफ्स दिए गए हैं. यू कैन यूज़ दोज. द वंस दैट हैव दिस क्राउन सिंबल आर एक्चुअली पेड, तो वो आपको पे करने पड़ेंगे अलग से, और बाकी जो है वो फ्री में अवेलेबल है. तो अभी इस डिज़ाइन के लिए, क्योंकि मैं थंबनेल बनाने वाला हूँ, I'll go to this new design. I'll scroll and find the YouTube thumbnail, this one. ठीक है. So YouTube thumbnail, it will open this editor here. The first thing that we get to choose is the size of it. Okay, so I've already selected the size. Then we'll click on the tick mark on the top. अब यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है बैकग्राउंड और पैटर्न. नाउ बैकग्राउंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ एक डार्क बैकग्राउंड विच इज़ ब्लैक फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, और हो गया ब्लैक, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा. एंड पैटर्न आई एम नॉट गोइंग टू show the pattern. Okay, I'll have it but I'll not show it. So I've put the pattern, I've made it a little smaller. You can zoom in and zoom out. ठीक है, तो इसको इतना रखते हैं. एंड देन I'll go to opacity and इसको कम कर देंगे, एकदम बहुत कम. ठीक है, that's how I do the designs. You are free to do it your way, right? Okay, तो पैटर्न सिलेक्ट हो गया. I'll click on that tick mark again and now it's ready. I'll go to next. Next जाते ही it will open that editor where I'm going to put the different elements that I'm going to use in this design. Okay, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है मेरा पिक्चर. So I'll go to graphics here and from here I'm going to select the picture, this one. ठीक है, this is the picture that I'm going to use for this particular thumbnail. Now you can see this picture is pointing towards the right side. I want it to point towards the left side because I want to put the text here on this side. Okay, so I'll select it, then I'll scroll here, I'll go to transform and यहाँ से मैं इसको horizontal flip कर दूंगा. ठीक है, like this. And then I'll zoom it a little more and I'll place it like this. The thumbnails that you see on my screen on my channel these days are actually something like this, right? You must have seen it already. Okay, तो ये मेरे basic positions हो गए मेरे फोटो का. Next I'm going to add some elements to it. So I'm going to click on that tick mark on the top. उसके बाद I'm going to add the text.
सो इस थंबनेल के लिए ज़्यादा कुछ मैं नहीं लिखने वाला, मैं जस्ट यहाँ पे लिखूँगा थंबनेल्स, ओके, क्लिक ऑन डन। इसको वाइट में करना है, ओके, थंबनेल्स, ओके। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट, द नेक्स्ट टेक्स्ट दैट आई वांट is mobile. Again, it should be on caps, so mobile app, okay. I'll put this somewhere below, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है। so this is my text, okay। और मुझे थोड़ा सा और एक चीज़ यहाँ पे लिखना है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं एक्चुअली, नॉट टू बिग, दिस मच, मोबाइल ऐप। और यहाँ पे कॉर्नर में मुझे लिखना है यूजिंग वाला जो पार्ट है उसका मैं फॉन्ट चेंज करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ डिफरेंट फॉन्ट, प्रोबेबली समथिंग कर्वी लाइक दिस वन, दिस इज गुड, ओके। अगेन इसको थोड़ा सा एंगल देके ऊपर यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, नाउ आई वांट टू also show the logo for YouTube, okay। So I'll click on this tick mark on the top again, I'll go to graphics again, then I'll go to add, and here say I'm going to select social. On social you can find YouTube ka logo, I'll going to put that on top so that it's visible like this much, this is fine। थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे ओवरलैप करने के लिए, ओके। then I'll send it back using this button here, okay। now it's visible that I'm talking about YouTube thumbnails, okay। now I'm going to add one more element to this thumbnail, which I normally do on all my thumbnails these days। so I'll click on add again, then I'll go to basic shapes, I'll click on this, I'll get this rectangle, I'll make it bigger, okay, like this, then I'll draw down, you can see this, and then I'm going to change the color to red, okay, this is the red, same red as the YouTube logo, okay। I'm going to send it backwards so it will look something like this, okay। now here I'm going to write one more thing, so I'll click on that tick mark, then I'll go to text again, and here I'm going to add live demo, okay, say done, bring it here, make it a little bigger like this, and change the text to white, and guys, I'm done. This is going to be my YouTube thumbnail. The one thing that I'm going to add to this is probably a little bit of shadow on the text, so I'll click on the text, then I'll go to shadow. Here I'm going to select a few things. First of all, color, it should be red, then I'm going to select blur, I do not want any blur, so I'm going to reduce it to 0, then I'm going to opacity, and I want it to make 100%, so it's a genuine shadow with dual color, okay। you can see the effect is coming up very nicely, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको मोबाइल ऐप को भी सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम जाएंगे कलर में, और कलर में हम सिलेक्ट करेंगे द कलर एज रेड, देन अगेन हम लोग कुछ और कलर सेट कर सकते हैं, एक्चुअली इसके लिए ब्लू करते हैं, ठीक है। देन विल गो टू ब्लर, विल मेक इट 0, आई डोंट नीड एनी ब्लर, opacity would be 100%, so the entire color is visible। now you see there is slight shadow on that text, इसको थोड़ा सा एक्चुअली बड़ा कर सकते हैं और इसको रिपोजिशन कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो मेरा जो फिंगर है वो भी सीधा पॉइंट कर रहा है उसके मोबाइल ऐप की तरफ। तो गाइज, दिस इज द फाइनल थंबनेल दैट यू कैन सी ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। इसको बनाने में मुझे करीब 8 मिनट समय लगा, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो आई कुड हैव मेड इट इन 4 to 5 minutes टाइम, राइट। सो लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस पर्टिकुलर थंबनेल, प्लीज कमेंट, प्लीज लेट मी नो, otherwise I'll not know if you are liking this kind of videos or not, okay। and once this is done, I'll click on this tick mark and then click on save
और इसको यहाँ से फोटोज में सेव कर लेंगे and you get a nice message on the top as well. Okay, so this completes my designing process. So this is how I create the thumbnails for my videos. If you like the system, please give me a like, and if you want to know more about these things, please consider subscribing to this channel and stay connected. This is Stan signing off from the Indian Freelancer YouTube channel. Thanks a lot for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.